Now before we start the numericals start करने से पहले जो भी formulas इस lesson में पढ़ा था, let us recollect that. So first formula क्या पढ़ा था? Refractive index is always is equal to what? Sin I upon sin R. Second, we had studied the formula that refractive index of second medium with respect to first medium is equal to what? Velocity of the light in the first medium upon velocity of the light in the second medium. उसी तरह refractive index of first medium with respect to second medium is equal to what? Velocity of light in the second medium upon velocity of the light in the first medium. Now absolute refractive index also we had studied. Absolute refractive index में कुछ भी लिखते नहीं है LHS और RHS में, n का इस बाजू में और इस बाजू में कुछ भी नहीं लिखता है. Absolute refractive index, just to make you understand I'll just write over here. यहाँ पे absolute refractive index में first medium is always vacuum, and let us take the other one as medium, any medium, it can be glass, water, anything. So absolute refractive index is what? Velocity of light in vacuum upon velocity of the light in medium. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिमेंबर दैट फर्स्ट मीडियम हमेशा वैक्यूम ही रहता है, सेकेंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, एनीथिंग. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट? वी वैक्यूम अपॉन वी मीडियम. नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया रहता है, कभी कभी सम्स में ब्रैकेट में दिया रहता है, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो यू बाय हार्ट दिस, इट्स नॉट सो हार्ड. सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम is equal to what? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. I'll repeat once more. The velocity of light in vacuum is what? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Now we had studied the ग्लास स्लैब का जो एक्सपेरिमेंट था वो जस्ट वी विल रिकलेक्ट दैट ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट. नाउ PQRS इज़ अ ग्लास स्लैब. ये ग्लास स्लैब का आउटलाइन है. AB जो है वो इंसिडेंट रे है, और ये दिस इज़ द नॉर्मल, and the angle made by the incident ray and normal is known as what? Angle of incidence, which is denoted by small letter I. जब भी ये PQ पॉइंट N से यानी जो इंसिडेंट रे है वो एयर से ग्लास में आएगा तो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड. सो एट पॉइंट एन द इंसिडेंट रे चेंजेस इट्स पाथ. जो पाथ है वो चेंज करता है अपना डायरेक्शन, मतलब लाइट अपना डायरेक्शन का या पाथ चेंज करता है व्हेन इट कम्स फ्रॉम एयर टू ग्लास. तो ये NM हो गया रिफ्रैक्टेड रे. जो एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर r. तो ये हो गया फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट पॉइंट N ऑन साइड PQ. यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार तो पॉइंट N में हुआ था, अभी एक बार पॉइंट M में होगा ऑन साइड SR. तभी ये हो गया इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल. तो एंगल मेड बाय दीज टू इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको कैसे डिनोट करता है? I1. दिस वाज I, सो दिस विल बी I1. व्हेन इट कम्स आउट, व्हेन द लाइट कम्स आउट फ्रॉम द ग्लास इनटू एयर, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से दूर जाएगा. तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो साइड SR मतलब SR से रिफ्रैक्ट होके एयर में आता है, दैट इज़ नोन एज इमर्जेंट रे, एंड द एंगल मेड बाय इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार पॉइंट N में जब भी वो एयर से ग्लास में आता है, दूसरी बार पॉइंट M में जब भी वो ग्लास से एयर में आता है. सो देयर इज़ अ को रिलेशन बिटवीन दीज टू रिफ्रैक्शन. सो व्हाट इज़ अ को रिलेशन बिटवीन दीज टू? That is refractive index of glass with respect to air is equal to 1 upon refractive index of air with respect to glass. That means refractive index of glass with respect to air is inversely proportional to refractive index of air with respect to glass. So this formula will be very useful in the numericals. So remember this, when there is two refraction, there is a correlation between these two refraction. What is that? Refractive index of glass with respect to air is equal to what? 1 upon refractive index of air with respect to glass. Now question number 2, prove the following statement. First sum, that is A. If the angle of incidence and angle of emergence of a light ray
falling on a glass slab are I and E respectively. Prove that I is equal to E. तो ये जो ग्लास स्लैब का जो एक्सपेरिमेंट है वही है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ इमर्जेंस ई है. तो वी हैव टू प्रूव दैट आई और ई दोनों भी इक्वल है. सो हाउ टू प्रूव दैट? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, तो देयर इज़ अ को रिलेशन बिटवीन बोथ द रिफ्रैक्शन, दैट इज़ व्हेन इट कम्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, और जब भी वो ग्लास से एयर में जाता है. तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन का भी होता है पॉइंट एन में जब भी वो एयर से ग्लास में जाता है, और सेकेंड रिफ्रैक्शन का भी होता है पॉइंट एम में जब भी वो ग्लास से एयर में जाता है. और इन दोनों के बीच में एक को रिलेशन है. सो दैट आई हैड एक्सप्लेन जस्ट नाउ ओनली. नाउ फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट पॉइंट एन, तो पॉइंट एन में जब भी फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है तो एट पॉइंट एन, सो व्हाट इट विल बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, refractive index of glass with respect to air is equal to what? Sin I upon sin R. Let this be 1. And for the second refraction at point M, the second refraction point M में होता है. So refractive index of air with respect to glass is what? Sin I dash, that is I1 upon sin E. Let this be 2. Now I had just now told that there is a correlation between both of them. So what is that? Refractive index of glass with respect to air is equal to what? 1 upon refractive index of air with respect to glass. Let that be 3. Now I'll put the values of this. Now refractive index of glass with respect to air क्या है? Sin I upon sin R. So sin I upon sin R. That is equal to 1 upon refractive index of air with respect to glass is what? Sin I1 upon sin E. Sin I1 upon sin E. Now from where did we get all this? ये वैल्यू अपन को कहाँ से मिला? From 1, 2 and 3. अभी ये 1 upon ये है, that is 1 upon sin I 1 upon sin E है, तो इसको ऊपर लेके जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो sin E ऊपर आएगा और sin I 1 नीचे आ जाएगा. So what it will become? Sin I upon sin R, that is equal to sin E upon sin I1. I'll repeat once more. ये डिनोमिनेटर है sin I1 upon sin E, तो इसको जब ये ऊपर लेके जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. sin E ऊपर चला जाएगा और sin I1 नीचे आएगा. So that is what I have written over here. Now these two angles, that is angle R and angle I1 is always equal. Why they are equal? Because they are alternate angle. तो R और I1 हमेशा equal रहता है क्योंकि ये दोनों alternate angle है. तो उसका मतलब क्या है? sin R और sin I1 दोनों भी equal है, ये दोनों equal है. तो यानी मैं sin R के जगह में sin I1 भी लिख सकती हूँ, नहीं तो sin I1 के जगह में sin R भी लिख सकती हूँ. So next step is that. So I have just written the formula over here once again, that is sin I upon sin R is equal to sin E upon sin I1, but R is equal to I1. Why? Because they are alternate angle. तो sin I upon sin R is equal to sin E. sin I1 के जगह में मैं क्या डालूँगी? R, sin R. Now if you compare both of them, denominator दोनों का equal है तो numerator equal हो जाएगा. sin I is equal to sin E. So therefore I is equal to E. So this is what we had to prove. Now question number 3, mark the correct answer in the following question. उसका sixth question, C question, not sixth, the C question. If the refractive index of glass with respect to air is 3/2. So refractive index of glass with respect to air, they have already given 3/2. What is the refractive index of air with respect to glass? So what is the refractive index of air with respect to glass? This we have to find out. So this is not given. तो refractive index of glass with respect to air already दिया है 3/2 और refractive index of air with respect to glass ये ढूंढना है. तो मैंने पहले ही बताया था कि इन दोनों के बीच में एक correlation है, that is refractive index of glass with respect to air is equal to what? 1 upon refractive index of air with respect to glass. Now
put the value. Now refractive index of glass with respect to air is what? 3/2. So 3/2 is equal to 1 upon refractive index of air with respect to glass. अभी इसको इधर लेके आओ. Refractive index of air with respect to glass, bring it on left hand side, so it will come this side is equal to, और ये 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा और ये 3 ऊपर है तो ये नीचे आएगा जब भी when it goes on the right hand side. So 1 into 2 is what? 2 and denominator में क्या है? 3. So answer is what? D. Option D is the correct answer, 2 upon 3. So option D is the correct answer, that is 2 upon 3. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था, तो यू हैव टू राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट इज इक्वल टू 2 upon 3. Now fourth one, question number 4, solve the following. Question number A is what? If the speed of light in a medium is 1.5 into 10 to the power of 8 meter per second, what is the absolute refractive index of the medium? The absolute refractive index of that particular medium ढूंढना है. Speed of light in a medium, let us denote that by Vm, that is equal to how much? 1.5 into 10 to the power of 8 meter per second. Absolute refractive index of the medium ढूंढना है, that means n ढूंढना है. Absolute refractive index रहेगा तो we don't write anything over here down, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का n में कुछ भी नहीं लिखते हैं. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n, वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम. अभी इसमें क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं दिया है, तो पता वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम नहीं दिया है, तो पता रहना चाहिए बाय हार्ट. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज हाउ मच? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज व्हाट? फर्स्ट वाला हमेशा वैक्यूम का रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम upon velocity of light in the medium. Now velocity of the light in vacuum is how much? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So 3 into 10 to the power of 8 upon medium का कितना दिया था? 1.5 into 10 to the power of 8. So 1.5 into 10 to the power of 8. 10 to the power of 10 to the power of 8 दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो that is equal to what? 3 upon 1.5. Now remove the decimal, so you'll get what? 3 into 10 upon 15. न्यूमरेटर में पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसके लिए न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर में पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, इसके लिए न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना. तो दिस विल बिकम 30 upon 15. तो 15 ones are 15 twos are, so n is equal to what? Absolute refractive index of the medium is equal to what? 2. Question number 4, B sum. If the absolute refractive indices of glass and water are 3 upon 2 and 4 upon 3 respectively, what is the refractive index of glass with respect to water? अभी absolute refractive index of glass कितना दिया है? 3 upon 2. Since it's absolute refractive index तो n ही लिखना रहता है, but for your convenience glass के साथ है, इसके लिए absolute refractive index of glass with respect to vacuum. First medium हमेशा vacuum ही रहता है absolute refractive index में. So that is equal to what? Refractive index of glass with respect to vacuum is what? Velocity of light in vacuum upon velocity of light in glass, which is given as what? 3 upon 2. Similarly absolute refractive index of water कितना दिया है? 4 upon 3. तो n is equal to what? We have to find out. They have already given, that is equal to what? 4 upon 3 for water. So for your convenience I'll just write over here refractive index of water with respect to vacuum is equal to what? V vacuum upon V water, which is already given as 4 upon 3. और ढूंढना क्या है? refractive index of glass with respect to water. Refractive index of glass with respect to water. Now what is refractive index of glass with respect to water? Velocity of light in water upon velocity of light in glass. So multiply and divide by V vacuum. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वी वैक्यूम ऑन RHS. तो RHS साइड में वी वैक्यूम से ऊपर मल्टीप्लाई करने का और डिवाइड भी करने का. दिस सम इज सेम लाइक कैन यू टेल पेज नंबर 75. दोनों भी सम सेम ही है. नाउ देयरफॉर refractive index of glass with respect to water is what? VW
upon Vg, that is velocity of light in water upon velocity of light in glass, into V vacuum upon V vacuum. मल्टीप्लाई भी करना है V वैक्यूम से और डिवाइड भी करना है V वैक्यूम से. अभी इन दोनों को रीअरेंज करो, V वैक्यूम को इस साइड लेके और V वाटर को उस साइड लेके जाओ, तो व्हाट यू विल गेट, refractive index of glass with respect to water is equal to V vacuum. I brought this V vacuum on this side और V water को उस साइड लेके जाओ, और नीचे वैसे रहेगा Vg, that is velocity of light in glass upon V vacuum. Now what is V vacuum upon Vg? V vacuum upon Vg is what? 3 upon 2. So here you will write down 3 upon 2. और Vw upon V vacuum क्या है? अभी V vacuum upon Vw अपन को 4 upon 3, क्वेश्चन में 4 upon 3 दिया है. अभी इसको उल्टा करो, therefore Vw upon V vacuum will become what? 4 upon 3 का रेसिप्रोकल लेना है, that is 3 upon 4. So Vw upon V vacuum is equal to 3 upon 4. So Vw upon V vacuum is what? 3 upon 4. So 3 into 3 is how much? 9, and 2 4s is how much? 8. So refractive index of glass with respect to water is what? 9 upon 8.